माय डियर व्यूअर्स एंड फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत है? तो अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट MCQs शामिल है। ये वो MCQs है जो कि अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल टेस्टिंग सर्विस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें अक्सर इन्हीं से सवालात आते हैं। मैं खुद भी उनको स्टडी कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले मैंने चूज़ लिया है बिल्डिंग मटेरियल्स को। तो इसका है सेक्शन 1। तो इसमें क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 25 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मर्डर द बाइंडिंग मटेरियल इज 1 सीमेंट, 2 सैंड, 3 सुरही, नंबर 4 साइंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, लेकुलर पेंट्स नंबर 1 आर जनरली अप्लाइड ऑन स्ट्रक्चरल स्टील, नंबर 2 आर लेस ड्यूरेबल एज कंपेयर टू इनेमल पेंट्स, नंबर 3 कंसिस्ट ऑफ रिजाइन एंड नाइट्रो सेलुलोस, नंबर 4 contain alcohol as thinner, नंबर 5 all the above। तो इसका आंसर है all the above। क्वेश्चन नंबर 3, wrought iron contains carbon up to नंबर 1 0.25%, नंबर 2 1%, नंबर 3 1.5%, नंबर 4 2%। इसका जो आंसर है वो है 0.25%। क्वेश्चन नंबर 4, pick up the polymineralic rock from the following, number 1 quartz sand, number 2 pure gypsum, number 3 magnetite, number 4 granite। आंसर है नंबर 5 नन ऑफ दिस। इसका आंसर है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 5, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, नंबर 1 for thin structure subjected to wetting and drying, the water cement ratio should be 0.45. Number 2, for mass concrete structure subjected to wetting and drying, the water cement ratio will be 0.55. Number 3, for the thin structure which remain continuously underwater, the water cement ratio by weight should be 0.55. And number 4, for massive concrete structure which remain continuously underwater, the water cement ratio by weight should be 0.65। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जितने भी है तो ये सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय नंबर 1 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, नंबर 2 डाई कैल्शियम सिलिकेट, नंबर 3 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट, नंबर 4 टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। आंसर है डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 7, elastomers can extend up to number 1 5 times their original dimension, number 2 7 times their original dimension, number 3 10 times their original dimension, number 4 3 times their original dimension। तो इसका आंसर है 10 times their original dimension, यानी कि नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, bitumen felt number 1 is used as a waterproofing material, number 2 is used as a damp-proofing material, number 3 is made from bitumen and hessian fibers, number 4 all the above। तो इसका आंसर है all the above। क्वेश्चन नंबर 9, in the method of condensation polymerization, number 1 low molecular substances are removed from the high molecular substance, number 2 the reaction proceeds with an evolution of ammonia, number 3 the reaction proceeds with an evolution of the hydrogen chloride, number 4 all the above। तो इसका आंसर है all the above। क्वेश्चन नंबर 10, in the cement the compound quickest to react with water is number 1 tricalcium aluminate, number 2 tetra calcium aluminate,
नंबर 3 कैल्शियम सिलिकेट, नंबर 4 डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो इसका आंसर है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्वेश्चन नंबर 11, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ lime-pozzolana is नंबर 1 30 मिनट्स, नंबर 2 60 मिनट्स, नंबर 3 90 मिनट्स, नंबर 4 120 मिनट्स, तो इसका आंसर है 120 मिनट्स। Question number 12. The clay to be used for manufacturing bricks for a large project is dug out and allowed to weather throughout number 1 the monsoon, number 2 the winter, number 3 the summer, number 4 the none of these, तो इसका आंसर है the monsoon। Question number 13. The rocks which are formed due to cooling of magma at a considerable depth from Earth's surface are called number 1 plutonic rocks, number 2 hypabyssal rocks, number 3 volcanic rocks, number 4 igneous rocks, तो इसका आंसर है plutonic rocks। Question number 14. Quartzite is a number 1 metamorphic rock, number 2 argillaceous rock, number 3 calcareous rock, number 4 siliceous rock, तो इसका आंसर है siliceous rock। Question number 15. The variety of a pig iron used for manufacture of wrought iron is number 1 bessemer pig, number 2 grey or foundry pig, number 3 white fog pig, number 4 मोटलेट पिग, तो इसका आंसर है वाइट फॉर्गी फिग। क्वेश्चन नंबर 16. सैंडस्टोन इज नंबर 1 सेडिमेंट्री रॉक, नंबर 2 मेटामॉर्फिक रॉक, नंबर 3 इग्नियस रॉक, नंबर 4 वोल्केनिक रॉक, तो इसका आंसर है सेडिमेंट्री रॉक। Question number 17. If the furnace is provided with insufficient fuel at low temperature, the type of pig iron produced is called number 1 bessemer pig, number 2 grey or foundry pig, number 3 white or forg pig, number 4 mottled pig, तो आंसर है white or forgy pig। Question number 18. Stainless steel contain number 1 18% of chromium and 8% nickel, number 2 8% of chromium and 18% of nickel, 12% of chromium and 36% of nickel, number 4 30% of chromium and 12% of nickel, तो इसका आंसर है 18% of chromium and 8% of nickel। Question number 19. Pick up the hypabyssal rock from the following. Number 1 granite, number 2 dolerite, number 3 basalt, number 4 all of the above, तो आंसर है all of the above। Question number 20. Depending upon the chemical composition and mechanical property, iron may be classified as cast iron, number 2 wrought iron, number 3 steel, number 4 all of the above, तो इसका आंसर है all of the above। Question number 21. Wrought iron contain carbon about number 1 1.5% to 5.5%, number 2 0.5% to 1.75%, number 3 0.1% to 0.25%, and number 4 none of the above, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 0.1% to 0.25%। Question number 22. The main constituent of a fly ash is number 1 aluminium oxide, number 2 silica, number 3 ferrous oxide, number 4 all of the above, तो इसका आंसर है all of the above। Question number 33. Bitumen in number 1 solid state is called asphalt, number 2 semi-fluid state is called mineral tar, number 3 fluid state is called petroleum, and number 4 all of the above, तो इसका आंसर है all of the above। Question number 24. The plastics made from siliceous resin, number 1 are as clear as glass, number 2 are tough and strong, number 3 possesses excellent electrical properties, number 4 all of the above, तो इसका आंसर है all of the above। Question number 25. Kaolin is chemically classified as number 1 metamorphic rock, number 2 argillaceous rock, number 3 calcareous rock, number 4 siliceous rock, तो इसका आंसर है argillaceous rock। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू।